We are now privileged to have the presence of honorable member of parliament, Srimati honorable member of parliament, whose name is second to none when it comes to the list is second to none when it comes to the list from India of world-renowned women athletes from India. In a short while from now, the chief guest for today's parade, Admiral R. Harikumar, PVSM, AVSM, VSM, ADC, Chief of the Naval Staff, Indian Navy will arrive. In a short while from now, the chief guest for today's parade, अधिकारी सबसे Admiral पहले R. Harikumar, परेड ग्राउंड के सामने युद्ध स्मारक पर माल्य अर्पण करेंगे। ADC, माल्य अर्पण Chief of the समारोह Naval Staff, उन लोगों के प्रति Indian Navy सम्मान का will प्रतीक arrive. है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब मुख्य अतिथि आएंगे तो सभी कर्मियों से अनुरोध है कि वे पुष्पांजलि समारोह के लिए युद्ध स्मारक की ओर मुख करके खड़े रहें। सभी वर्दीधारी कर्मियों को लास्ट पोस्ट के लिए सलामी देनी है, जो कि पहली धुन की आवाज है, और अधिकारियों को रेवली के लिए भी सलामी देनी है, जो बुलबुलर द्वारा बजाई गई है। ब्रेक तैयार है श्रीमान। 1961 Agniveer on parade sir. Okay, ready.
as you can now see platoon number 2 led by Harsh Agniveer SSR marching across with great pride and honor. देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हुए हमारे जवान अग्निवीर पहले प्लाटून का नेतृत्व करते हुए एसआई कुमार पवन संतोष अग्निवीर तालियों के साथ इनका मनोबल कदम से कदम मिलाकर अद्भुत ऊर्जा और एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, as you can now see platoon number 2 led by Harsh Agniveer SSR marching across with great pride and honor. Next we have TT Vanita Agniveer MR leading the आगे बढ़ते platoon हुए with हमारे great zeal जवान and अग्निवीर enthusiasm, पहले showcasing प्लाटून का नेतृत्व patriotism at करते its हुए peak. एसआई पवन संतोष अग्निवीर तालियों के साथ देश के कदम मिलाकर हमारे अगले जोशीले अग्निवीर का प्रदर्शन कमान संभाली है। Ladies and gentlemen, as you can now see platoon number 2 led by Harsh Agniveer SSR marching across with great pride and honor. Next we have TT Vanita MR leading the आगे बढ़ते हुए platoon with हमारे great zeal जवान and अग्निवीर enthusiasm. पहले Now we प्लाटून have का नेतृत्व एसआई पवन संतोष अग्निवीर तालियों के साथ देश के कदम मिलाकर हमारे अगले जोशीले अग्निवीर का प्रदर्शन कमान संभाली है। Ladies and gentlemen, as you can now see platoon number 2 led by Harsh Agniveer SSR marching across with great pride and honor. अनिल अग्निवीर Next we have TT Vanita MR leading the आगे बढ़ते platoon हुए with great हमारे zeal जवान and अग्निवीर enthusiasm. पहले Now we have एसआई पवन संतोष अग्निवीर तालियों के साथ देश के कदम मिलाकर हमारे अगले जोशीले अग्निवीर का प्रदर्शन कमान संभाली है। Ladies and gentlemen, as you can now see platoon number 2 led by Harsh आपके Agniveer. सामने हमारी महिला अग्निवीर कदम से कदम मिलाते हुए और हम किसी से कम नहीं दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए प्लाटून कमांडर श्याम राव चोगले अग्निवीर एसएसआर के साथ Adding grace to this beautiful evening and moving forward is our next platoon commanded by R.S. Kumar Agniveer SSR. अनेकता में एकता का ये अद्भुत दृश्य विभिन्न हिस्सों और संस्कृति से आए हमारे नौसैनिक प्लाटून कमांडर चिंताला नानी अग्निवीर एसएसआर उनका नेतृत्व करते हुए मंच की ओर अग्रसर। Bold stripes, bright stars, brave hearts. Our next platoon led by D. Gopal Agniveer SSR marching its way with glory and grandeur. सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ हमारा 13वां प्लाटून जिसकी कमान संभाली है अजित पी अग्निवीर एमआर ने। Bringing fresh air and treat to our eyes is our upcoming platoon led by Umeda Omkar Agniveer SSR. गर्व से आगे बढ़ते हुए हमारे युवा अग्निवीर 3 मूल्यों के साथ कर्तव्य, सम्मान और साहस के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनकी कमान संभाली है प्रदीप एस अग्निवीर एसएसआर ने। Heads held high for our righteous and strong country. Marching with their souls, our next platoon led by Jai Rupala Lakshman Agniveer SSR. भारतीय नौसेना पोत चिल्का की शान को बढ़ाते हुए ये प्लाटून शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त आपके सामने प्लाटून कमांडर प्रखर भाजपेयी के नेतृत्व में मंच की ओर बढ़ रहे हैं। Next we have Balgudi Savit Agniveer SSR leading the platoon with best of the best, showcasing perfect synergy, perfect marching and perfect picture.
आज उपस्थित सभी अतिथिगण और माता पिता के लिए गर्व का दृश्य, भावनाओं और जुनून से ओत-प्रोत हमारे नौसैनिक प्लाटून कमांडर विवेक कुमार के साथ मंच की ओर बढ़ते हुए। Leadership involves finding a parade and getting in front of it. Leading our next platoon is Neeraj Pandey, Agniveer, SSR. जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। सेना है तो हम हैं। हमारा अभिवादन अगले प्लाटून को, जिनकी कमान संभाली है शुभम यादव अग्निवीर SSR ने। And now we have Om Pawar, Agniveer SSR, leading the platoon, undeterred by obstacles, marching into the service with greed. भारतीय नौसेना के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन से कम नहीं और हमारे भविष्यवादी सभी 273 महिला अग्निवीरों को हमारा नमन। आगे बढ़ते हुए 23वां प्लाटून, जिनकी कमान संभाल रहे हैं अविक कुमार रॉय, अग्निवीर SSR। This is an evening of wonders indeed, filling each one of us with utmost courage and patriotism. The perfect platoon, led by Vishnu Raju Singh Jadhav, Agniveer SSR, marching its way through. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सूरज अग्निवीर SSR के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर प्लाटून अग्रसर। Next we have Vishwajit S, Agniveer SSR, leading the platoon, portraying confidence and fidelity towards the nation as the culture resides in the hearts and soul of its people. क्रॉस कंट्री, जल तरन, सीमेंटशिप, NBCD जैसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और कठिन प्रशिक्षण के बाद नौसेना के भविष्य आपके सामने से जाते हुए, जिनकी कमान संभाली है सुरेश सिंह, अग्निवीर SSR ने। Watching them march is commendable, with such efforts accomplishing all their dreams. Next we have Gaurav Rawat, Agniveer SSR, leading the platoon with great glory. देवियों और सज्जनों, आज के शाम को और भी ऐतिहासिक और मनमोहक बनाने वाले ऊर्जा से भरपूर हमारे युवा प्लाटून, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं मनी रेड्डी, अग्निवीर SSR। Freedom in our minds, faith in our words, pride in our souls. Our next platoon, led by Sangram Swain, Agniveer SSR, marching its way to celebrate the day. जयेश यादव शेलकर, अग्निवीर SSR की अगुवाई में हमारे समुद्री सीमा की रक्षा करने का प्रण लिए हमारा 31वां प्लाटून सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। Next we have Shashi Kumar Chandran, Agniveer SSR, leading the platoon with passion, recollecting the 16 weeks of enthusiastic training, displaying exemplary drill, synchronized with the band. और अब देखिए 23वें प्लाटून को वेंकटेशन P, अग्निवीर के नेतृत्व में देशभक्ति, वीरता और विश्वास की भावना से सरोबोर होकर मंच की ओर अग्रसर। Ladies and gentlemen, behold as the 34th platoon, led by Dinesh Rewar, Agniveer SSR, marches past the dais. देवियों और सज्जनों, आगे बढ़ते हुए हमारे जवान अग्निवीर प्लाटून का नेतृत्व करते हुए हनुमंतु सतीश, अग्निवीर SSR। कृपया तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाया जाए। Ladies and gentlemen, as you can now see, the next platoon, led by B. Sitaramlu, Agniveer SSR, marching across with great pride and honor. देव बेल चंदन, अग्निवीर
एसएसआर के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर अद्भुत ऊर्जा और एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे अग्निवीर। Next we have Jai Prakash Mahato, Agniveer SSR, leading his platoon with great zeal and enthusiasm, showcasing patriotism at its peak. देश के हम हैं रक्षक, हमारे अगले जोशीले अग्निवीर प्लाटून की कमान संभाली है पवित्र नायक अग्निवीर एसएसआर ने। One flag, one land, one heart, one hand, one nation, evermore. Now we have Raj Prajapati, Agniveer SSR, leading his platoon. 4 महीने के प्रशिक्षण की प्रक्रिया के उपरांत ये उभरते नौसैनिक अनुशासन और शौर्यता के प्रतीक बनकर आगे बढ़ रहे हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं एन रवि अग्निवीर एसएसआर। Following the band is the marching contingent, the next platoon led by Kota Nagaraju, Agniveer SSR. अनेकता में एकता का ये अद्भुत दृश्य विभिन्न हिस्सों और संस्कृति से आए हमारे नौसैनिक प्लाटून कमांडर नितिन रावत अग्निवीर एसएसआर के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर। Adding grace to this beautiful evening and moving forward is our next platoon commanded by M. Sunita Agniveer SSR. देवियों और सज्जनों, आपके सामने हमारी महिला अग्निवीर कदम से कदम मिलाते हुए और हम किसी से कम नहीं का दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए प्लाटून कमांडर सौभाग्य एस टोजीकर अग्निवीर एसएसआर के साथ मंच की ओर अग्रसर। Bold stripes, bright stars, brave hearts. Our next platoon, led by Ankit Kumar, Agniveer SSR, marching its way with glory and grandeur. सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ हमारा अगला प्लाटून जिसकी कमान संभाली है प्रेम कुमार आचार्य अग्निवीर एमआर ने। Bringing fresh air and treat to our eyes is our upcoming platoon led by Dinesh Kumar Singh, Agniveer SSR. गर्व से आगे बढ़ते हुए हमारे युवा अग्निवीर 3 मूल्यों के साथ कर्तव्य, सम्मान और साहस के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं दिवेंद्र कुमार अग्निवीर एसएसआर। Heads held high for a righteous and strong country, marching their souls. Our next platoon led by E. Pavan Agniveer SSR. भारतीय नौसेना पोत चिल्का की शान को बढ़ाते हुए ये प्लाटून शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त आपके सामने पवित्र समाल अग्निवीर एसएसआर के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं। Next we have Priyanka Gandhi, Agniveer SSR, leading the platoon with the best of the best, showcasing perfect synergy, perfect marching and perfect picture. आज उपस्थित सभी अतिथिगण और माता पिता के लिए गर्व का दृश्य भावनाओं और जुनून से ओतप्रोत हमारे नौसैनिक प्लाटून कमांडर आशीष शुक्ला अग्निवीर एसएसआर के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं। Leadership involves finding a parade and getting in front of it. Leading our next platoon is Mohit Kumar Rajat, Agniveer SSR. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। रोहन गजेंद्र बोशरे अग्निवीर एसएसआर के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। And now we have Sandeep Arya, Agniveer SSR, leading the platoon, undeterred by obstacles, marching into the service with greed.
देवियों और सज्जनों, आज की शाम को और भी ऐतिहासिक और मनमोहक बनाने वाले ऊर्जा से भरपूर हमारे युवा प्लाटून, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं भारत देवराज गादरी अग्निवीर एसएसआर। An evening of wonders indeed, filling each one of us with utmost courage and patriotism. This perfect platoon, led by Vivek Kumar Sahu, Agniveer SSR, marching its way through. सौम्य रंजन बारीक अग्निवीर एसएसआर की अगुवाई में हमारे समुद्री सीमा की रक्षा करने का प्रण लिए हमारा अगला प्लाटून सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। Next we have Harpal B. Jait, Agniveer SSR, leading the platoon, portraying confidence and fidelity towards the nation as the culture resides in the hearts and soul of its people. भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन से कम नहीं और हमारे भविष्यवादी सभी अग्निवीरों को हमारा नमन। आगे बढ़ते हुए हमारा प्लाटून भूषण सहारे अग्निवीर एसएसआर के नेतृत्व में मंच की ओर बढ़ रहा है। Watching them march is commendable with such efforts, accomplishing all their dreams. Next we have Krishna Murari, Agniveer SSR, leading the platoon with great glory. और ये देखिए हमारे अगले प्लाटून को, जिनकी कमान संभाली है सतीश अग्निवीर एसएसआर ने, जिसमें देशभक्ति, वीरता और विश्वास की भावना से सरोबोर होकर मंच की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। Freedom in our minds, faith in our words, pride in our souls. Our next platoon, led by Anand Hanumant Nevse, Agniveer SSR, marching its way to celebrate the day.
Award of Merit. The Award of Merit is presented to the trainees who are best in the overall order of merit. In assessing the overall merit, the marks scored by the trainees in academics and other training activities like drill, swimming, cross-country, participation in sports and extracurricular activities are taken into account. Only those trainees who have passed their basic swimming test, physical fitness test, drill square test, in addition to passing in academics, are considered for award. Best All-Round Agniveer MR. Ajit P. Agniveer MR, number 300215, Yankee. Ajit P. Agniveer MR has scored 84.25% aggregate and stood first in the overall order of merit. He receives the Chief of the Naval Rolling Trophy and the Chief of the Naval Staff Gold Medal Award for the Best Agniveer MR. Ajit P. Agniveer MR. Best All-Round Agniveer SSR. Amlakanti Jairam Agniveer SSR, number 10053, Zulu. Amlakanti Jairam Agniveer SSR has scored 88% aggregate and stood first in the overall order of merit. He receives the Chief of the Naval Staff Rolling Trophy and the Chief of the Naval Staff Gold Medal for Best Agniveer SSR. Amlakanti Jairam Agniveer SSR. General Bipin Rawat Trophy for Best All-Round Women Agniveer. General Bipin Rawat, a visionary leader, a scholar soldier, and a military reformer, was known for his professionalism, principles, conviction, and decisiveness. As the first Chief of Defense Staff and Secretary of Department of Military Affairs, General Rawat rallied for organizational and structural reforms to integrate the armed forces. General Rawat's enthusiasm led the armed forces to turn Agnipath, the biggest HR transformation by the armed forces since independence, from an idea to reality. To acknowledge and honor General Rawat's contribution to the transformational Agnipath scheme and towards enhancement of tri-services synergy and jointmanship,
General Bipin Rawat Rolling Trophy for the Women Agniveer trainee standing first in the overall order of merit has been instituted. To present the trophy, we request Mrs. Kritika and Miss Tarini, daughters of late General Bipin Rawat, who are amongst us today, and Mrs. Kala Harikumar to kindly come onto the dais and present it to the Women Agniveer who stood first in the overall order of merit. Khushi Agniveer SSR, number 1001935 Alpha. Khushi Agniveer SSR has scored 87.25% aggregate and stood first in the overall order of merit in women's category. Khushi Agniveer SSR. Madam P.T. Usha, Honorable Member of Parliament and a legend in the track events of India, Vice Admiral Hampioli, Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Commodore N.B. Pradeep, Commanding Officer, INS Chilka,
flag officers, commanding officers, Miss Mithali Raj, former cricketer, Team India, and the pride of Indian women's cricket, family members of late General Bipin Rawat, Shri Chiman Singh, ex-POCD-1, Mahavir Chakra, hero of the 1971 war, Shri Gajanan Jagannath Mane, ex-ME1, Padma Shri and social worker, Shri Harjinder Singh Chima, ex-POME and founder and owner of Chima Boilers, Shri Shankar Singh Sisodia, ex-POCD, a philanthropist, Shri Darshan Singh Aluwalia, ex-Chief ELA, Administrator of DPS, Shri Avatar Singh, ex-MCPO second class, national level hockey coach, Shri Harishankar Yadav, ex-Petty Officer, national record holder in cycling, Shri Manoj Kumar Sharma, ex-POELR, an entrepreneur, distinguished guests, members of the staff and faculty at Chilka, Agniveers, proud parents, members of the media, ladies and gentlemen, good evening to all of you. It's indeed a privilege to review the passing out parade of the first ever batch of Agniveers. It is a historic event and all of us are fortunate to witness this history in the making. It is also the first time that a passing out parade is being held at sunset, a welcome departure from the usual morning parades. At the outset, my congratulations to the 2,585 Agniveers of the passing out course, which includes 272 women Agniveers as well. All of you can be justifiably proud for having successfully endured the rigors and challenges of training at Chilka, both mental and physical. It is not an easy task. My compliments also to each one of you for the impeccable turnout, good military bearing and smart drill that I just witnessed. I would have expected nothing less from the first batch of Agniveer. This also exemplifies Chilka's motto of Uttamena hi Siddhanti Karyani. Success comes through efforts. Well done to all of you. For the Agniveers who are passing out today, मैं इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि आप सब इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास भारत के प्रथम अग्निवीर होने का, इतिहास भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को और मजबूत करने का, इतिहास भारतीय नौसेना में एक नए युग की शुरुआत करने का। जिस नए युग की मेन बात कर रहा हूँ, इस युग में आप लोग आने वाले सभी अग्निवीरों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। आप ये तय करेंगे कि भविष्य के अग्निवीर नौसेना में रहकर किस तरह भारत की सुरक्षा के हिस्सेदार बनेंगे। यही नहीं, आप ये भी निर्धारित करेंगे कि फौज के अलावा भी आप भारत निर्माण में कैसे योगदान देंगे। आप सभी नेवी की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक इसके लिए भी है that we have the first ever batch of women sailors passing out today. एक मौका है देश में ही नहीं
बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत की नारी शक्ति का परचम लहराने का। As the nation watches our women sailors stepping across INS Chilka's quarterdeck, it will provide inspiration for an entire generation of young women in the country. मुझे विश्वास है कि आप सबके योगदान से भारतीय नौसेना और सशक्त, संपूर्ण और समावेशक बनेगी। We have also instituted the General Bipin Rawat Trophy for the best women training, commencing with this batch. जनरल रावत ने भी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनकर इतिहास रचा था। ये अग्निपथ स्कीम इंप्लीमेंट करने में उनका इम्पोर्टेंट रोल भी था। It is therefore only fitting that this trophy be named after him. I am also very grateful to the family for having spared their valuable time to be present here amongst us today for this passing out parade and to present the award. As our Agniveers pass out from Chilka, I would like to assure each one of them that they can look forward to an exciting and immensely satisfying career, which will also be challenging in many ways. भारत और भारतीय नौसेना तेजी से विकसित हो रहे हैं और आपको इस ग्रोथ का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि you are stepping into one of the most admired professions across the world, the profession of arms. So what sets this profession apart from every other profession is the willingness to go into harm's way with a smile on our lips, pride in our hearts, and resolve in our action, regardless of the dangers and the risks. In short, with a sense of unlimited liability. So be proud of this commitment and serve the nation with strength and honor. So as you cross a significant milestone today, let me share a few thoughts as to what you can expect as you step into the service and what the service expects from you. सबसे पहले आप सर्विस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भारतीय नौसेना आपको न सिर्फ एक कौशल नौसैनिक बनाएगी बल्कि एक सक्षम इंडिविजुअल बनने की भी प्रेरणा देगी। आपका डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल और प्रोफेशनल ग्रोथ तक सीमित नहीं होगा बल्कि नौसेना आपकी सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्किल्स को भी बढ़ाएगी। आपकी ये ग्रोथ नौसेना में तरह तरह के टास्क करने से होगी। आप हर वो काम करेंगे जो एक वीर सैनिक अपने देश की सेवा में करता है, राइफल चलाने से लेकर मिसाइल फायरिंग तक, रडार ऑपरेशन से लेकर इंजन मेंटेनेंस तक, खुद एक टीम का हिस्सा होने से उस टीम को लीड करने तक। ये सब आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाएगा, एक लीडर बनाएगा। ये बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि नौसेना में डेवलप की गई स्किल्स आपको पूरे जीवन एक राष्ट्र समर्पित नागरिक की तरह जीने के लिए मोटिवेट करेगी। यही नहीं, नौसेना आपको भविष्य के सभी चैलेंजेस के लिए भी रेडी करेगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप हर मुश्किल को न सिर्फ आसानी से पार कर पाएंगे बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपने देश के लिए नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। जहाँ तक रही बात कि नौसेना
आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, डू योर ड्यूटी एंड डू इट वेल। आप अपना कर्तव्य करिए और उसे अच्छी तरफ से निभाइए। आप ये हमेशा याद रखिए दैट टू बी अ पार्ट ऑफ एन एलाइड ग्रुप of maritime warriors, and more so to be able to go into battle with them, you will need to be professionally sound, technologically aware, morally upright, ethically correct and physically strong. इन सब में नेवी की कोर वैल्यूज ड्यूटी, ऑनर, करेज आपको हमेशा गाइड करेगी। द सर्विस and our citizens repose tremendous faith in you. Therefore, you must never lose sight of your core purpose, which is to serve. I am sure that each one of you will live up to these expectations and excel in the cadres and branches that have been allocated to you in this premier institute. I also extend my greetings and compliments to the parents of the passing out Agniveer. हमारा देश आप सबके इस योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेगी। आपने अपनी संतानों को सेवा भाव से देश को समर्पित कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। I cannot promise you that these young warriors will not be sent in harm's way, but I can assure you that wherever they go, they will always be fully prepared, equipped, motivated, supported and enabled by the service in every way. Each one of them will make you proud. INS Chilka has rendered yeoman service to the country, and the successful passing out of the first batch of Agniveers today is an outcome of the untiring efforts, diligence and dedication to duty of the faculty and staff of this training unit. They have toiled hard to impart the best in terms of exposure, expertise, experience and ethos to the young trainees. To them too, as we say, Bravo Zulu, Shabash. So before I conclude, my heartiest congratulations once again to all passing out Agniveers and the award winners. आपसे थोड़ी देर में आप सब एक युवक या युवती जिन्होंने 4 महीने पहले चिल्का ज्वाइन किया था से ट्रांसफॉर्म होकर भारत के एक सक्षम समुद्र प्रहरी बन जाएंगे। अपने देश की रक्षा करने का अवसर बहुत भाग्य से मिलता है और आप सबको इस कर्तव्य को भलीभांति निभाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कभी शत्रु की बुरी नज़र हमारे देश पर पड़े तो आप सब उसे ऐसा सबक
The word parade comes from the old tradition of combat formation, in which soldiers were held in strict formation so as to maximize their combat effectiveness. Although present warfare have evolved from closely held formations to rapidly mobile battle groups, the contemporary military organizations still use the parade for ceremonial purposes and to showcase drill, discipline, and precision. Drill and physical training inculcates discipline, which is the bedrock of military life. देवियों और सज्जनों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें और आईएनएस चिल्का के अग्निवीरों के इस समूह पर ध्यान दें जो आपकी ओर मार्च करके आएंगे। अग्निवीर आपको निरंतरता ड्रिल पेश करेंगे, सटीक का एक सेट, समन्वित और जटिल ड्रिल गतिविधियों जिन्हें समूह द्वारा कमांड का एक भी शब्द के बिना निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक राइफल का वजन 4 किलोग्राम होगा। Ladies and gentlemen, the stage belongs to the Continuity Drill Squad.
Ladies and gentlemen, the continuing guard will fire 3 blank rounds. Ladies and gentlemen, request everyone to have a look at the TV screens in front of you. The guard is forming up in the letters depicting Indian Navy, the fine service which Agniveers have joined. Now they have formed in the letters showing INS Chilka, this premier training establishment. They are now formed up showing the letters Agniveer, the identity of these young boys and girls.
We would like to highlight that the Agniveer SSRs performed today joined INS Chilka on 1st of December and have just spent about 16 weeks in the naval service. Also, there are 26 trainees who took part in RD parade had once again showcased their capabilities. The continuity guard that you witnessed has been achieved by strong instructor-trainee relationship and dedicated practice in just 24 days without affecting any other facet of training. The proud instructors are Rahul Dubey, Chief Petty Officer, Gunnery Instructor, and Fani Kumar, Petty Officer, Gunnery Instructor. Today's ceremony will culminate with the ceremonial lowering of naval ensign. To conduct the ceremony, we will now invite Chilka Band. We are now witnessing Officer of the Day marching inside the parade ground for conducting ceremonial lowering of the naval ensign. All spectators are requested to rise and face the main mast on the quarterdeck. All personnel in uniform are requested to salute with the note.
मुझे विश्वास है कि इस परेड में शामिल होने वाले सभी कार्मिक इन युवा और उत्साही समुद्री योद्धाओं द्वारा परेड के अनुकरणीय प्रदर्शन से प्रसन्न होंगे और अपने साथ जीवन भर की यादें लेकर जाएंगे। पूरे अग्निवीर बैच की ओर से मैं नौसेना अध्यक्ष को विश्वास दिलाती हूं कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और हम इसे अच्छे से निभाएंगे। Well, I, Mr. Shilpi Kushwaha, I, Left Nikhil Kumar Singh, and myself, Captain Jovito Jolly, are thankful to the visiting guests for being a wonderful audience tonight. Wish you good health and times ahead. Signing off for tonight. Thank you and Jai Hind. अमित जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला
हम सब आपके लिए उसके लिए आभारी हैं। सेशन का जो नाम है आर्किटेक्ट ऑफ 2024, द मैन विद द ब्लूप्रिंट। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप कोई ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। ब्लूप्रिंट तो होता ही है, मगर इंटरव्यू में कोई, मैं नहीं मानता कोई भी राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति या नेता अपना ब्लूप्रिंट इतने सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखेगा। आप निकलवाने का जरा प्रयास करिए। मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई। तो जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा था और दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2014 से और अब हम 2023 में आ गए, एक नई व्यवस्था आप लेकर आए। जब आप सत्ता में आए, आपकी विचारधारा अलग थी। आपका विजन ऑफ इंडिया वो बाकी लोगों से कैसे अलग है, और ये जो समय अभी आपको 9 साल का मिला है, इसमें आप कितना बदलाव ला पाए? देखिए, आप थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरी पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। मेरी पार्टी जब से बनी तब से, और ये 10 साल की, अगर 9 साल की आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मेरी पार्टी की विचारधारा के आधार पर और हमारे नेता मोदी जी के तय किए हुए लक्ष्यों के आधार पर चल रही है। जहाँ तक विजन का सवाल है, हम शुरू से राजनीति में मानते आए हैं कि ये देश एक अलग प्रकार का देश है। ये देश बहुत पुराना देश है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और इस देश की नीतियाँ इस देश की स्थानीय परिस्थिति के आधार पर बननी चाहिए, न कि 2-3 करोड़ की आबादी वाले देशों से एडॉप्ट की हुई नीतियाँ हो सकती हैं। और दूसरा, हम मानते हैं कि जिस प्रकार का भारत के अंदर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हमारे देश के भूभाग में, हमारे देश की जनता में, और विशेषकर देश के युवाओं में, हम सब ने लक्ष्य रखना चाहिए कि जब आज़ादी की शताब्दी हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो। यही नीति लेकर हम चल रहे हैं और इसी के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अमित जी, आर्किटेक्ट ऑफ 2024, सबसे बड़ा सवाल आज सबके मन में जो है वो ये कि अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, अब उसमें क्या होने वाला है? अगले साल से इस देश को कौन चलाएगा? आप ही चलाते रहेंगे या कोई बदलाव आएगा? और आप भी चलाएंगे तो क्या इसी स्वरूप में या किसी और फॉर्मूले के तहत? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है 2024 का, इतने बड़े देश में देश की जनता जब तय करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, तब उसका आकलन जनता ही कर सकती है। परंतु मैं देश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं मानता भी हूं और प्रयास भी करता हूं कि मेरा घनिष्ठ संपर्क जनता के साथ रहना चाहिए। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आजादी के बाद का जो शुरुआती समय था, उसके बाद पहली बार एक महीने में 70 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 3 बार पूर्ण टर्म के लिए चुनकर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। जैसा आपने कहा, अगर जो आप कह रहे हैं सही हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी आप का सही मानकर चलिए, आगे का सवाल पूछो। 3 टर्म लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को मिलेंगे, आपको मिलेंगे। इससे पहले जब हम देश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालते हैं तो नेहरू एरा और इंदिरा गांधी का एरा, इन दो को हम एक बेंचमार्किंग हमारे देश में हो गई है कि नेहरू के समय में ये होता था और इंदिरा गांधी के समय में ये होता था। क्या आपको लगता है कि मोदी एरा
अब नेहरू और इंदिरा एरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बेंचमार्किंग में पहले नंबर पर है, और क्या आप उनको अब हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री के तौर पर मानेंगे? देखिए, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से, क्योंकि हर समय में अलग अलग चुनौतियां होती है, हर व्यक्ति की अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का विजन होता है, मगर सब ने अच्छा प्रयास किया है, ऐसा मैं तो कम से कम मानता हूँ। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, वो गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय के मन में आज ये सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, समग्र विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। 2014 में जब आए तब बदलाव की लहर थी, 2019 में जब आए तो आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, गवर्नेंस पर आप आए। 2024 में आपका यूएसपी क्या होगा? देखिए, यूएसपी वगैरह शब्द आप करते हैं, हमारा एक सालों पुराना एजेंडा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से एक ही नीति पर चलते हैं कि देश के हर भारतीय का भारत के संसाधन पर अधिकार है, और दूसरी बात, हर एक के जीवन स्तर को ऊपर लाने का प्रयास कर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ऑडियंस है उसमें से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, मगर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। इस देश में 10 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं था। इस घर में देश में 3 करोड़ घर ऐसे थे कि जहां बिजली ही नहीं थी। इस देश में देश के 60 करोड़ गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करने की किसी ने सूद नहीं ली थी। इस देश में 60 करोड़ गरीबों की भूख की किसी ने सूद नहीं ली थी। आज 9 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, हर घर में बैंक अकाउंट है, हर घर में बिजली है, हर घर में शौचालय है, हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला हुआ है, और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर भी है। मैं नहीं मानता किसी भी 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया होगा। और ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में पहली बार अनुभव आया है कि देश की आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र आया है वो मेरे लिए है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दृष्टि से देखें तो आज विश्व में कोई भी समस्या हो, विश्व में कोई भी समस्या आज हो, पूरे विश्व के नेता राह देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समस्या के बारे में क्या बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। 2014 से 2023 तक में परिवर्तन आया है। विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण को, भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पिछले 9 साल में, ठीक है, आपने विकास किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, आर्थिक रूप से भी विकास किया होगा, लेकिन लोगों की जो एक सोच होती है अपने देश के प्रति, अपने एक राष्ट्र के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, उस सोच में भी आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? बहुत बड़ा बदलाव है भाई। भारत गौरव का अनुभव हर व्यक्ति कर रहा है। आज़ादी के 75 साल जब होने जा रहे थे, मोदी जी ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम दिया। तिरंगा किसी को खरीदने से मिल नहीं रहा था, और कोई घर भारत में ऐसा नहीं होगा, कोई बिल्डिंग ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको तिरंगा नहीं दिखाई पड़ा होगा। ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। मैं आपको कोरोना की बात कर रहा हूं। जब कोरोना की शुरुआती सुगबुगाहट सुनाई दी गई, देश भर के पंडित ये कह रहे थे, और फिर दुनिया भर के पंडित ये कह रहे थे कि भारत का बहुत बुरा हाल होगा। हमारे
स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया में नंबर देने जाए तो बहुत नीचे तक है, सब मानते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि कोरोना का सामना भारत ने सबसे अच्छे तरीके से किया है। न केवल हमारे वैज्ञानिकों ने इसका R&D कर हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एंटीडोट बनाए, ये तो ठीक है, परंतु इसको 130 करोड़ लोगों तक टीकाकरण करना, ये टीकों को पहुंचाना, 17,000 फुट ऊंचाई से लेकर सागर के मध्य में बने हुए छोटे हुए गांव के और लक्षद्वीप के एक अंतिम परिवार तक, और पहुंचाना, टीका देना, और 5 ही सेकंड में इसको मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ टीका की रिसीट भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं अमेरिका से आए हुए एक मेरे निजी स्वजन को मिला हूं जिनको बहुत तकलीफ थी यहां आने में। उस वक्त मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, इतने चिंतित क्यों हो आप लोग? तो उसने कहा हमारा वैक्सीनेशन तो हो गया है मगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैंने बोला हमारे यहाँ लगवा देते पहले आकर तो मोबाइल पर आ जाता। आज पूरे देश में बिहार का एक व्यक्ति अगर गुजरात के अंदर श्रमिक है और किसी कारखाने के अंदर वो श्रमिक का काम कर रहा है, उसको अपने हिस्से का 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं गुजरात में चाहिए तो अपने कार्ड से ले लेता है और उसके बाकी के परिवार का बिहार में मिल जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर जनता तक मोदी जी ने शासन की सुविधाओं को पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और एक बात आप मान कर चलिएगा, चाहे स्टार्टअप की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे पॉलिसी बनाने की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र का मिला जुला आज असर ऐसा है कि इतनी दुनिया भर में स्लो डाउन की चर्चा हो रही है, भारत वो स्लो डाउन से आगे निकल चुका है कोरोना के बाद। ये मोदी जी ने बनाई हुई नीतियों का परिणाम है। आर्थिक नीतियों पर हम चर्चा करेंगे। अब आपके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी आपने बहुत अच्छे से निभाई। 2014 के चुनाव में आपने बहुत कमाल का आपका खुद का प्रदर्शन था जिसकी वजह से आपकी पार्टी को फ़ायदा मिला। आपने यूपी में इतनी सीटें दिलवाई। फिर आप बीजेपी के अध्यक्ष बने, बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर आप ले गए और फिर आप होम मिनिस्टर बने इस देश के। ये 4 साल जो आपके गृह मंत्री के तौर पर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आप हाउ विल यू रेट योरसेल्फ एज द होम मिनिस्टर? देखिए, रेटिंग तो जनता ही करती है और ज़्यादा से ज़्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। बाकी अधिकार तो जनता का है, चुनाव में जनता बताती रहती है। परंतु मुझे बहुत संतोष है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने तब से लेकर आज तक 9 साल में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट थे जो नासूर बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे लगभग 4 दशक से, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता था। और इन 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक साल में 1,80,00,000 यात्री कश्मीर को विजिट किए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हर प्रकार की हिंसा के अंदर 70% कमी हुई है। आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट जो लोकल युवाओं से करते थे वो लगभग बंद हो गई है। पथराव की घटना आज तक जैसा चैनल हमेशा जो बताता रहता था आज बता नहीं सकता है। जुलूस भी वहां निकलते नहीं है। एक प्रकार से आप ऐसा कश्मीर की जनता फील कर रही है कि कश्मीर के अंदर अब साच अर्थ में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 9 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप झारखंड और बिहार पूर्णतया
वामपंथी उग्रवाद से आज मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगभग मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वामपंथी उग्रवाद बचा है। मुझे भरोसा है कि इसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सफलता मिलेगी। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी लगभग 65% से ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 राज्यों में ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमने कई सारे समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा के समझौते जब से राज्य बना तब से नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच चुका है, विकास पहुँच चुका है और बाढ़ का नियंत्रण भी हो चुका है, रोड भी बने हैं और नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम भी 24 के पहले पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से तीनों हॉटस्पॉट पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के शासन के 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ढेर सारी ऐसी चीजें थी, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ढेर सारी ऐसी चीज, ट्रिपल तलाक, कोई मानता ही नहीं था कि इसका कोई समाधान संभव है। निजी तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि इनमें से क्या करके मिली? मुझे तो हर चीज की संतुष्टि है भाई। ये तीनों क्षेत्र में जो आज एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार से लोग जी रहे हैं, इसका मुझे कम से कम बहुत बड़ा संतोष है और देश की जनता को भी बहुत आनंद भी है और संतोष भी। देखिए, आपकी इतनी सारी उपलब्धि हैं, अब ये भी एक उपलब्धि हो गई कि अब आज तक पर भी पॉजिटिव कवरेज चलती, ये भी उपलब्धि है आपकी। भैया ये तो मैं बोल रहा हूं, तो दिखाओगे ना, लाइव है, कैसे रोकोगे? आज तक का कवरेज तो तब हो जब ये तीनों इश्यू पर कोई आप एक स्टोरी 45 मिनट की कर लिए होते मेरे बोलने के पहले। चलो अब कर लेना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहाँ पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है। अमित जी, अब आज के संदर्भ में बात करते हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और 2 मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफ़ी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता। दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव के बाद भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते। रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं, उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं।
वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना, ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, स्पीकर साहब की चैम्बर में उन्होंने जाकर बात करनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब को भी कहा है, वो भी आने चाहिए। दोनों ओर से चर्चा कर इसका रास्ता निकाल कर बहस करनी चाहिए। पर वो गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भाषण देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि वो जवाब दें या ना दें? स्पीकर साहब ने, मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से मैं बताता हूं, बहुत स्पष्ट कहा कि आप कभी भी बोल सकते हो, परंतु आपकी पार्टी पार्लियामेंट चलाने के लिए सहमत है या नहीं है वो पहले तय कर आइए। तो पहले अब उनकी माफी होगी या पहले जेपीसी बैठेगी? अरे ऐसा है सुधीर भाई, इसकी चर्चा स्पीकर की उपस्थिति में करनी चाहिए, दोनों दलों ने मिलकर। चले, मैं तो आज ही कह देता हूं कि स्पीकर साहब के पास जाकर चर्चा करिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कह देता हूं। मुझे यकीन है वो सुन रहे होंगे, अभी आपको पूरा देश ही सुन रहा होगा। लेकिन अमित जी, राहुल गांधी अभी ब्रिटेन गए, वहाँ पर बहुत सारी बातें वो करके आए। उसके बाद आपकी पार्टी ने, सरकार के मंत्रियों ने भी उसको पार्लियामेंट में बहुत ज़ोर शोर से उठाया। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी बात थी, एक राष्ट्रीय महत्व की वो इतनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार इस बात को उठाने में लग जाए, और आप इससे राहुल गांधी का ही महत्व और बढ़ा रहे हैं? किसी का महत्व किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, अपने कामों से बढ़ता या कम होता है, तो वो चिंता तो आप मत करिए। जहां तक मेरी पार्टी के रिएक्शन का सवाल है, हमारा रिएक्शन राहुल जी के लिए नहीं है, उनके कंडक्ट के लिए है। मैं दो उदाहरण आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक, इंदिरा जी गई थी इमरजेंसी के बाद इंग्लैंड में, और उस वक्त शाह कमीशन बन चुका था। इंदिरा जी को कुछ दिन के लिए जेल में ले जाने का भी प्रयास हुआ था, और उस पर किसी पत्रकार ने इंग्लैंड में पूछ लिया कि आपका देश कैसे चल रहा है। तो उसने कहा, वी हैव सम इश्यू, मगर मैं यहां नहीं बताऊंगी, मेरा देश अच्छा चल रहा है। और विदेश में आकर मेरे देश के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां आकर मैं इंडियन हूं। एक दूसरा, अटल जी विपक्ष में थे और कश्मीर पर यूएन में चर्चा होनी थी, सरकार कांग्रेस की थी। पहली बार आज तक के इतिहास में, और अंतिम बार हुआ है कि भारतीय दल का नेतृत्व किसी मंत्री ने नहीं किया था, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, क्योंकि ये कश्मीर पर चर्चा थी जी। ये जो भरोसा होता है, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जो राजनीति के ऊपर होते हैं। मैं मानता हूं सबने ये परंपराओं का पालन करना चाहिए, और हम ना उनकी पर टिप्पणी करें ना उनके उद्गारों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और देश की संसद में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमारा टिप्पणी है। और मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश को कभी ना कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। पर आप माफी पर बिल्कुल अड़े नहीं है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? भाई, अड़े है नहीं अड़े है, आप स्पीकर नहीं हो। मैंने कहा कि स्पीकर के सामने बैठकर दोनों पार्टियां चर्चा करें, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे आए, संसद चलने लगेगी। मगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक्शन में कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होता है। अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही थी कल की शेर आ गया पार्लियामेंट में, इस तरह की बातें अब हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कहा जब वो पार्लियामेंट आए कि शेर आया, संसद में शेर आया। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि पर भी बहुत एक काम हो रहा है? पहले उनको तपस्वी कहा गया, फिर अब जब वापस आए तो कहा गया कि अब शेर आ गया है पार्लियामेंट में, अब फिर शेर आने के बाद वो कह रहे हैं कि पूरी मोदी सरकार मुझसे डर गई है। देखिए, जनता बहुत मुहिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया।
एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, और तीनों उनके स्टेट थे। ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है। अब इस सवाल के दूसरे भाग पर आते हैं, और वो भाग ये है कि लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला हो रहा है और जेपीसी की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी की बहुत मदद की है। उस पर अभी तक देश ने आपका पक्ष नहीं सुना है, और आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मंच है जहां आप बता सकते हैं लोगों को। नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उसके सामने सभी लोगों के पास जो तथ्य है वो रखने चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है तो, और वो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद में भी अगर लगे रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर उठाना चाहिए। ये प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे को उठाकर देश को गुमराह कर दोगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। जनता भली भांति जानती है। आरोप तब चिपकते हैं कि व्यक्ति का कंडक्ट, पास्ट का जीवन उस आरोप के अनुरूप हो। इस तरह से आरोप नहीं चिपकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे जांच करवाने के योग्य इस मुद्दे को माना, तो आप भी फिर सरकार भी अपनी ओर से कोई जांच करवा सकती थी, सेबी को कह सकती थी। और किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है, एक मिनट, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच एक पैरेलल चलेगी, आप भी जांच कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सेबी को कहा ही है, और सेबी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाकर उन्होंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उनको। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में मैं इतने बड़े मंच पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है और रहना चाहिए। अब अमित जी, एक और जो लगातार विपक्ष का आरोप है वो ये कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और लगातार विपक्ष के नेताओं को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का चुनाव था, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। जी। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते, एक, किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 2, और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, 3। भाई, कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है, ऐसा अगर किसी भी जांच में एजेंसी के ध्यान में आता है तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और ये सारे लोग जो हाय तौबा कर रहे हैं, इसमें 2 केस छोड़कर सारे केस रजिस्टर्ड उनके टाइम में हुए हैं, हमारे टाइम में नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने शासन में जो 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उस वक्त सीबीआई में फिलहाल मामला टालने के लिए केस रजिस्टर कराए थे। फिर इसके अंदर धन शोधन का मामला है तो ईडी कर रही है। पहली एफआईआर उनके समय में हुई है, 2 केस छोड़कर, सारे केस में हमने नहीं किया है भैया। और कोर्ट में जाते हुए उनको कौन रोक रहा है? और बहुत, हमारी पार्टी में तो कम है, उनकी पार्टी में ढेर सारे अच्छे वकील हैं। नहीं, पर अभी उनको बेल भी अगर मिलती है तो वो इसको एक जीत की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई देखिए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे कविता हो, चाहे शिवसेना के जो नेता हों, सिर्फ कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, या ममता बनर्जी की पार्टी के जो लोग हों। ठीक है, फिर वो कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर बेल लेके बाहर आ जाते हैं, फिर वैसे ही आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार वो करते हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर भी है। देखिए, हर
चीज को जनता बारीकी से देख रही है और जनता आपका अपना मैंडेट देगी। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूँ, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। और मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए, यही सही रास्ता है। एक अमित जी, एक बात होती है टाइमिंग। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग टाइमिंग, किसी भी एक्शन को टाइमिंग से जोड़ते हैं कि ये फेयर था या नहीं फेयर था। जैसे मान लीजिए बीबीसी ने सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी तो कुछ हफ्तों के बाद उनके ऊपर आईटी की कार्रवाई हो गई। नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठाता हूँ। 2002 की घटना 2023 में चुनाव के अगले साल दिखाने का क्या मतलब है? भाई बताओ, कोई मतलब है? ये पूरी घटना 2002 की है। चुनाव है 2024 में, आप 2023 में देखा, तो आप इसके टाइमिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? और जहां तक ये इनकम टैक्स के टाइमिंग की बात है, मैंने भी पूछा किसी को, ये 3 साल से इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अब कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो कोई नहीं है कानून के ऊपर, सबने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव वॉर है और ये एक लड़ाई चल रही है जिसमें एक तरफ मान लीजिए बीबीसी भी हो सकता है, पश्चिमी मीडिया हो सकता है, जिनको आप अर्बन नक्सल कह सकते हैं, लिबरल्स हो सकते हैं, वो आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, G20 है, उनको ना G20 अच्छा लगता है, ना आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट उनको अच्छी लगती है, ना विश्व में आपका जो मान सम्मान हो रहा है वो उनको अच्छा लगता है। एक नैरेटिव ये बनता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। देखिए, मैं नहीं मानता देश में कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा कहता होगा कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था एक मार्क भी नीचे है, कोई नहीं कहता है। अब किसी का चश्मा ही अगर पीला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और नैरेटिव उनके करने से सेट नहीं होता। ये तो 2002 से मोदी जी के पीछे पड़े हैं, 2000 की साल से इनका नैरेटिव चलता। तो ना मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते 3 बार 4 बार चुनकर आते, ना 2 बार प्रधानमंत्री के नाते चुनकर आते। नैरेटिव देश की जनता तय करती है। डेमोक्रेसी में जनता सब चीज़ों को देखती है, इवेल्युएट भी करती है और उसको जवाब भी मतदान के अंदर देती है। मैं जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने एआई की थोड़ी मदद ली और मैंने सोचा कि मैं एआई से भी कुछ सुझाव लेता हूँ। तो मैंने उसमें एक टॉपिक भरा, इंडियाज़ मोमेंट, ये भारत का पल है, इस पर कुछ लिख कर दें। तो एआई ने शुरू में तो अच्छी चीज़ें लिख के दी कि ठीक है भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और आखिर में उसने लिखा कि भारत में बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, भारत में सिविल सोसाइटी में बहुत डिवीज़न हो रहा है, भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले ये पश्चिमी मीडिया में आया, फिर इंटरनेट में आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्बेडेड हो गया है। तो ये एक अलग तरह का एक वॉर, एक अलग लेवल पे चला गया है और इसके लिए आपको लगता है और अभी समय लगेगा इससे निपटने के लिए, या आपने क्या सोचा है, कैसे इससे आप? देखिए, हमने तो, हमारा रणनीति स्पष्ट है। हम सच्चे मन से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम सच्चे मन से देश के गरीब के लिए काम कर रहे हैं और हम सच्चे मन से भारत को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्टअप करना आप लोगों का काम है और वो नैरेटिव सच्चा है या झूठा है वो तय करना जनता का काम है। दोनों लोग अपना अपना काम करते रहिए। हमें जितनी भी शक्ति ईश्वर ने दी है वो भारत को महान बनाने के लिए लगा रहे हैं। अमित जी, इंटरनल सिक्योरिटी में आप अपने सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? एक पाकिस्तान का फ्रंट है, एक चीन का फ्रंट है, एक 2.5 फ्रंट, हम अपने देश का भी फ्रंट की बात करते हैं। और अभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सिप्री की जो ये कहती है कि हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं सब के सब चीन से हथियार खरीद रहे हैं। पाकिस्तान 77% खरीद रहा है, बांग्लादेश 74% खरीद रहा है, श्रीलंका भी खरीद रहा है। तो हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिरे हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप इन बातों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि आज
भारत आज़ादी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो आज है, क्योंकि हमारी नीतियां स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारी कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। रक्षा नीति विदेश नीति का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गई थी। आज हमारी दोनों पॉलिसी स्पष्ट है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं, परंतु हमारी सीमाओं के अंदर किसी का दखल सहन नहीं करेंगे। पहले आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, अनेक सारी घटनाएं होती थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सके। और ये दो घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद एक तीसरा देश भारत ऐसा है जिसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। G20 अब हमारे देश में होने जा रहा है और हम सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुपर पावर बने जितनी भी देश, सुपर पावर शब्द ठीक नहीं है ना, हम एक कंसेप्ट में विचार करते हैं। हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे आगे हो। भारत कभी भी सुपर पावर बनने की ना सोच सकता है ना सोचना चाहिए, ना ये हमारे देश का कल्चर है ना हमारे देश का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन दोस्ती के आधार पर भी, मैत्री के आधार पर भी आप मजबूत हो सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जी जरूर। G20 से हमारे देश के लोगों को कितना फायदा होगा, ये हमारे देश के लोग पूछते रहते हैं बार बार। देखिए, हमारे देश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्टार्टअप, आज दुनिया अचंभित होकर भारत के स्टार्टअप को देख रही है। R&D में हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र की पॉलिसियां हमने नई बनाई, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे खदानों का कॉमर्शियल उपयोग हो, हर क्षेत्र की। PLI के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हम सब लोग मान रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सब लोग मान रहे हैं। G20 एक ऐसा मौका है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है ये पूरी दुनिया देखे। और पहली G20 की मीटिंग बहुत बड़े समय के बाद, शायद कभी नहीं हुई ऐसी है, जिसमें G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग 59 शहरों में हो रही, 59 सिटीज में हो रही। एक भी राज्य, एक भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां G20 की कोई ना कोई मीटिंग नहीं होगी। तो दुनिया से 1 लाख से ज्यादा लोग जो आएंगे वो हर राज्य में जाएंगे। हमारी संस्कृति की जो विविधता है, हमारी खान पान की विविधता है, हमारी जो अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, इसको ये फील कर कर जाएंगे और भारत की संस्कृति, नए भारत की कल्पना और भारत के अचीवमेंट तीनों को लेकर वो जाएंगे। मैं मानता हूं हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर कर भारत का दुनिया को परिचय कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और जो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से जाएंगे वो सारे लोग भारत की सुगंध लेकर जाएंगे। मैं वापस 2024 पर आता हूँ। आप 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस से मुक्त आप कर पाए भारत को या नहीं कर पाए, या फिर क्षेत्रीय दलों को आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, अभी तो जो चित्र देख रहा है, हर राज्य में हमारी स्पर्धा किसी न किसी अलग अलग दल से होगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मगर स्पर्धा तो है ही, लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने बैकग्राउंड के साथ रखते हैं और जनता फैसला करती है।
पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप कांग्रेस से जब लड़ते हैं तो आसानी से जीतते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय दल से आप लड़ते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, यूपी में हम 4 चुनाव सपा बसपा से लड़कर जीते। ये उत्तर आरजेडी को कई बार हमने बिहार में हराया है, कई बार हराया है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्षेत्रीय दलों से ही लड़कर जीते हैं। अभी हम रामचरण के साथ बैठे हुए थे, आपने भी देखा, और जब ये ऑस्कर अवार्ड मिले भारत को तो इसमें भी नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा, खड़गे जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये साउथ इंडिया ने जो है ये 2 ऑस्कर अवार्ड भारत को दिलवाए हैं। इस तो ये एक लगातार एक कोशिश है नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। आपको लगता है? भारत को ऑस्कर जो भी दिलाता है इसका गौरव होना चाहिए, जो भी दिलाए, कोई भी भारतीय दिलाए, इसका हमें गौरव होना चाहिए और हमें गौरव है। परंतु ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड देख रहे हैं ना, वो डिवाइड नॉर्थ साउथ का नहीं है। मैं भी फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, कुछ फिल्में भी अभी साउथ की बहुत चल गई। मैंने भी इसको ध्यान से एनालिसिस किया है। जिन फिल्मों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता थी, वो फिल्मों को ज्यादा स्वीकृति मिली है। भारत बदल रहा है सुधीर जी। बिल्कुल। और अगर आप ये आरआरआर की भी बात करें तो यहाँ पर भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, जब फिल्मों की बात हो ही रही है, दक्षिण भारत की फिल्में हमारी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं? देखते हैं हम। कोई भी बढ़ा सकता है भाई, इसको आप दक्षिण उत्तर न करिए। जो बढ़ाता है उसको जनता पसंद करती है। लेकिन बॉलीवुड इसमें आपको लगता है थोड़ा पीछे है? ना जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इतना कहना आया हूँ कि जनता का टेस्ट बदल रहा है और टेस्ट को सफलता के लिए सबने मैच करना चाहिए। आप फिल्में देखते हैं? और हाउ ऑफन यू वॉच फिल्म्स? नहीं, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपकी जो छवि है वो बहुत ही सख्त प्रशासक की छवि है कि ऐसा लचर प्रशासक होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि भाई बहुत गुस्से वाले होंगे और हर समय क्रोध में रहते होंगे, बुरा मान जाते होंगे, और एक सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी वो बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कर कर आप सॉफ्ट पर्सनालिटी का इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास मत करिए। मैं जैसा हूं जनता मुझे अच्छे से जानती है। मेरे सार्वजनिक जीवन में विधायक और सांसद के नाते 30 साल पूरा होना आ गया, तो ये बहुत लंबा समय है। बार बार जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो जानती ही होगी। आप अमित जी खुद एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। आपको पॉलिटिक्स का शौक था, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो कि आप पॉलिटिक्स को सत्ता के साथ जोड़कर देख रहे हो। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए देश का वातावरण ऐसा है कि मेरी बात काफी लोग साहजिकता से नहीं लेंगे, सरलता से नहीं लेंगे। इसको बोलने की खातिर बोला गया वाक्य भी मानेंगे, मगर मैं दृढ़ता से बोलना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है, और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मोदी जी के लिए जो लगातार बातें होती हैं, इस बार बात कही जा रही है कि कब्र खोद देंगे, पहले मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। इस बार फिर से चुनाव से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब खड़गे साहब कहते हैं कि ये 10 सिर वाला रावण है, और फिर वही आपको पार्लियामेंट में भी मिलते हैं और फिर आपके साथ बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बाजरे की खिचड़ी भी खाते हैं, तो जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो क्या ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब करता है, या कभी आप इस बारे में बुरा नहीं मानते? नहीं भाई, सब अपने अपने विचारों के अनुसार बोलते हैं, मगर परंतु जो इस प्रकार के उद्गार करते हैं, मैं इसका एक अलग एनालिसिस किया है। सोनिया गांधी जी से लेकर एक कब्र खुदने वाला या मोदी तुम मर जाओ वाला जो नारे लगाए हैं आप पार्टी के लोगों ने, इस सारे नारों के बाद मोदी जी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता का ही अभिप्राय होता है।
हाउ इज़ योर इक्वेशन विद गांधी फैमिली? जब आप कभी पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर कभी मिलते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है? नहीं भाई, मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा? जैसा सामने वाले का मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा उनके साथ होगा। तो उल्टा कर देते हो, उनका कैसा है? देखिए, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध किसी गांधी परिवार के सदस्य से नहीं है। राजनीति में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो है, वो एक और पार्टी के नेता है, मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो दोनों अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं। अमित जी, पिछली बार 303 सीटें मिली थी, इस बार आपका आकलन अपना क्या है? और अगर 303 भी आपको लेनी भी हैं तो इस बार आपको शायद साउथ दक्षिण भारत से और ज़्यादा सीटें लेनी पड़ेंगी। आपने कुछ, आप आर्किटेक्ट हैं, ब्लूप्रिंट आपने बनाया होगा, कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं इतना कह सकता हूं, एरिया आप छोड़ दीजिए हम लोगों पर, परंतु इतना निश्चित कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की सीटों में बढ़ोतरी होगी, कमी कहीं पर भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 303 से भी ऊपर जाएंगे? जी। कश्मीर में इस साल आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप कश्मीर में चुनाव करा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में? सुधीर जी, साच अर्थ में चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, तो आपने गलत जगह पे सवाल पूछ लिया है। नहीं, पर आपका अपना भी तो एक आकलन होगा कि क्या चुनाव जम्मू आयोग कश्मीर, जब भी कहेगा, जब भी उनकी तैयारी पूरी होगी, वो चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथ में है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, चुनाव आयोग जब उनकी तैयारी पूरी होगी तब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा, हम तुरंत ही रिपोर्ट भेज देंगे। और ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो सकती है क्योंकि अब सारे पुलिस स्टेशन ऑनलाइन है, सारे आंकड़े ऑनलाइन है, एनसीआरबी में हर पल के हिसाब से सारी एफआईआर दर्ज हो जाती, मतलब काउंट हो जाती है, तो आंकड़े तो कोई जनरेट कर नहीं सकता। जब भी वो रिपोर्ट मांगेंगे हम रिपोर्ट दे देंगे। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, तो लास्ट में एक दो सवाल आपसे और करता हूं। कैबिनेट रिशफल की बड़ी चर्चा हो रही थी अभी हाल ही में कि आप चुनाव से पहले एक बार कुछ फेरबदल करेंगे। कहाँ चल रही है रिसफलिंग? मोदी जी ने करना है, आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हो? जब भी वो करना चाहेंगे हो जाएगा। संविधान ने मोदी जी को जिम्मेदारी दी है कैबिनेट रिसफलिंग की, तो सबने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है इस बात की। अमित जी, मैंने एक चीज और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के कि आपने कम से कम 20 किलो वजन जरूर लूज किया होगा, एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे, और टच वुड, ये अच्छी बात है। तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? भाई, ऐसा है कि मैंने जो फॉलो किया है दूसरे को बीमार कर देगा। सबने अपने अपने डॉक्टर को पूछकर डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, मगर सबने फिट होना चाहिए। बट आपने क्या किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, खाने पीने पर भी कंट्रोल किया है, योगा करता हूँ, आसन भी करता हूँ। अगर मैं आपके अपने परिवार की बात करूं तो जब हम जैसे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, आपकी जो पोती है, आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है जब आप उनकी बात करते हैं, तो आपने उनको वैदिक स्टडीज़ भी आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में भी आप पढ़ा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी भी आप उस बच्चे को दे रहे हैं। जी, वो पढ़ रही है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी, और आप चाहते हैं कि क्या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है? सबने पढ़ना चाहिए, सबने जानना चाहिए। हर क्षेत्र में पढ़ाई से तो फायदा ही होता है। मैं मानता हूं कि हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत जीवन के बहुत सारे रहस्य भी छिपे हैं और देश की जानकारी भी छिपी है। देश के कल्चर को समझने लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बच्ची पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है। आपके समय में ये 8-9 साल में जुडिशियल ओवररीच के भी कई मामले सामने आए हैं। जैसे मान लीजिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इसमें चीफ जस्टिस भी उस पैनल में रहेंगे। आप इस तरह की चीज़ों का स्वागत करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि संविधान ने सबकी मर्यादाएं करी है। मेरी भी मर्यादा है, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सब ने अपने अपने दायरे में रहकर करना चाहिए। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें अदालत के किसी फैसले पर मैं टिप्पणी कर दूं। परंतु मैं इतना सुनिश्चित मानता हूं कि संविधान ने जो 3 व्यवस्थाएं करी है, तीनों व्यवस्था ने एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए।
जी, पर ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि हम लॉ मिनिस्टर के भी बयान देखते हैं, हम कई बार ये चीज़ देखते हैं कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है। वो कंसर्न मंत्रालय के मंत्री है, वो बोल सकते हैं। मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा अदालत पर। जी, पर क्या आप इसको चैलेंज करना चाहेंगे? क्या आप देखिए, इसमें आप कोई सफल बदलाव नहीं चाहेंगे? होंगे सुधीर जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। तो अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है और ब्लूप्रिंट आपने ऐसा कोई ख़ास आज बताया नहीं, पर इंतज़ार रहेगा कि आप देश के सामने ब्लूप्रिंट कभी प्रस्तुत करेंगे। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो लोग जानना चाहते थे। मैंने कोशिश की कि मैं आपसे पूछूं और आपका पक्ष जो है उन महत्वपूर्ण सवालों पर जो पहले नहीं आया था वो आपका आ सके। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू। जी, धन्यवाद। To take it from here, I'd like to invite on stage our session's moderator, Rajdeep Sardesai, consulting editor, India Today Television. Hello and welcome once again to the India Today conclave. Few, if any, constitutional posts at the moment in the country carry the weight of public expectations and the microscope of public scrutiny as much as that of the Chief Justice of India and, dare one say, the Supreme Court itself. Not a day passes when the apex court doesn't make the headlines in some form or the other. So how do those who have worn what some might argue is now a crown of thorns see the role of the Supreme Court and the Chief Justice of India in particular? Today we'll be listening to three Chief Justices of India, two former recent Chief Justices and the current Chief Justice,
in the course of this day. Please therefore welcome our first guest, Justice S.A. Bobde, Chief Justice of India from November 2019 to April 2021. Justice Bobde, welcome to the India Today conclave. Am I right in suggesting that the Chief Justice's post today is a crown of thorns, constantly under scrutiny and therefore seemingly under immense pressure as well? Well, the thorns, if any, are poked by the media. I see. It is a difficult place to be in, the Chief Justice of India. But, and it is a heavy responsibility. There's too much competition for the court's ears. And obviously everybody wants to win his case. But I'm saying this frankly, without any disrespect. The problems really arise from the somewhat irresponsible comments judges have to face. And the Chief Justice is always answerable. Anything that happens in the court is the Chief Justice who is responsible. Now, you seem to be almost suggesting that Bechara Chief Justice. No, not at all. You know, I was just telling you, just carrying forward your analogy of thorns. Yes. I said the post itself, there's no thorns on the post. Those thorns are what you get from the onlookers. Okay, the onlookers will probably turn around and say that the fact is many judgments in this country at the moment are tangled in political wars. You were, for example, part of the Ayodhya judgment. And the nature of the case, the kind of politics that had swirled around Ayodhya for decades meant inevitably whatever judgment you delivered, there was going to be some kind of a political fallout to it. That's so in every case. But is that part of the problem, that because the Supreme Court today increasingly finds itself tangled in taking up these political cases, whether it is Rafale, whether it is the Ayodhya judgment, because these cases come eventually to the Supreme Court, the court almost inevitably, and the Chief Justice inevitably finds himself caught in a political battle? Well, I would like to say that the word label political can be attached to anything. I see nothing political about the Ayodhya case, the case, what we heard. There is probably nothing political about Rafale. It was a defense deal. Ayodhya was an issue about whether Lord Ram, amongst other things, Lord Ram was born in that place, etc., etc., etc. So I don't see, and the case has been going on since, the problem has been going on since pre-independence times. What is political about it except that politicians talk about it? Or some might want to derive political mileage from a controversy. We are not involved in politics as courts. We decide a case that comes up before us, brought to us by parties who have something to say and who have a claim, and we adjudicate that claim. What is politics in it? So you didn't feel extra pressure while you all were hearing and eventually delivering the judgment in a case like Ayodhya? No. Possibly a greater sense of, possibly some sense of anxiety on what it might, what effect it might have on the body politics to some extent, but not the political kind. The reason I'm saying this, sir, is that there is a huge question mark over whether the Supreme Court is truly independent today. And that includes truly independent. Independent of what? Independent of executive interference or executive pressures. I quote a senior Supreme Court advocate, Dushyant Dave, he's also headed the Supreme Court Bar Association, said judges are scared of the Modi government and reluctant to rock the boat. Well, I don't think I should respond to his views.
He is entitled to his views, but I do not see any executive interference in the judicial process. I did not experience any. You could ask, you've invited other colleagues of mine today, you could ask them. You see, the way the executive can interfere is by having benches suitable to it in each case, and that doesn't happen. The benches, the roster is prepared by the Chief Justice of India, independent of any pressures. शौक मत होइएगा साईं बाबा जी, ये रत्ती भर अगरबत्ती पूरा महीना चलानी पड़ती है और ये पैकेट साल भर। सारा पैसा हम आप दोनों के लिए ही जमा किए ताकि आप दोनों को 4 धाम भेज सकें।
पहलगाम में बादल फटने के कारण भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मृतक के परिवार को 7 लाख मिलेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। या ईमानी है तबे बेईमानी है। 14 लाख के चक्कर में इसको 14 पुश्ते याद नहीं दिलाती ना, तो हमारा भी नाम कंजूस चमना प्रसाद पांडे नहीं। But that itself has become contentious over times. You know how 4 judges staged a few years ago a remarkable press conference, an unprecedented press conference, where they questioned the manner in which allegedly bench fixing might have been taking place. That press conference, I am not aware of the allegations of bench fixing. Though there was something about the preparation of rosters. Yeah, questioning over the role of the Supreme Court Chief Justice as master of the roster. That, to my mind, is one of the most unfortunate events in the history of the Supreme Court of India. And I tried my best to see that it doesn't happen. And thereafter, I am saying this because some magazine has already written about my role there. And I did try to bring about a peace between the opposing points of view. I succeeded, party didn't succeed, but it's an unfortunate event. I don't want to, I don't support, I wouldn't have done it myself. You believe it's an unfortunate, you're saying something important. You believe it's an event that should have never happened. It's an unfortunate event. You don't subscribe to the way it happened. Let me give you examples, since you say you don't want to respond to what an individual advocate's opinion is. Habeas corpus petitions of those who were arrested, for example, in Kashmir, after the setting aside of Article 370. They were kept pending for months. You didn't touch the electoral bonds issue, sir, which again is politically a hot potato. All of this is being interpreted to suggest that the court and the Chief Justice's office unwilling to take on the government. People were for months in jail, sir, under the Public Safety Act in Jammu and Kashmir, habeas corpus petitions filed, and the Supreme Court of India does not see urgency in that matter? I don't think they were kept pending deliberately as you people see it or anybody else sees it. And one thing I must tell you in this context, I believe, and it is said to be a law of how the human mind works, and that law is that a suspicious person always finds what he is looking for. It is true in the domestic front, it is true in politics, it is true in the executive, it is true in the media, it is true everywhere. You always find what you're looking for. I'm only giving you a reality, sir. Hundreds of innocent people possibly were in jail for months. Habeas corpus is the basic right that I have under the Constitution. First of all, it was during the pandemic. Yes. It was during the pandemic. It was difficult to get matters heard. I can tell you, I was not ready for this question. I can tell you hundreds of cases where the courts asked parties, would you like to hear? And parties said, no, we cannot appear. Advocates said they cannot appear. And it happened that there was something about the CAA matters were also pending then. That's right. And they wanted those to be heard. Now that involves allowing 500 to 600 advocates to enter the courts. That was not possible. And some of them said, no, we want our matters tagged, we will not get them untagged. But frankly, I would have liked to answer this question with statistics, which I am not ready for. Okay. You were Chief Justice also, sir, during the contentious, I'll come to COVID later, during the contentious farmer agitation. And you stayed the implementation of farm laws until further orders. Now, traditionally, the Supreme Court, sir, has been very wary of passing interim orders that stay laws passed by Parliament. And yet you did so. Yes, I did. Were you aware again that, like it or not, you were stepping into a political minefield? You see, the court seemed to be stepping into a political minefield. The media reacts and then you say, oh, the media is dragging us into... political minefield?
there was a law before us. Yes. There was a challenge to a law before us. Yes. We were seeking the government's response to the challenge. We were reading stories and watching stories on the television about people attacking each other, forces attacking each other, people jumping onto the Red Fort on the Independence Day, I think. And Republic Day. Republic Day. So many violent instances. I had stated to the other side, I stated to the government, why don't you consider doing this? Why don't you consider withholding the laws? Because look at the consequence. There is a law on one side and there is a large-scale violence on the other side. What is important right now? And there was no response. So I consulted my colleagues and we were all of the unanimous opinion that this should be stayed. What's political about it? Okay. There was no election in the offing. And anyway, we have nothing to do with elections. And you're very clear, at no stage has the judicial process been influenced, therefore, by the executive during your tenure. Yes. Okay. The tangle between the executive and judiciary, sir, over appointments. You were Chief Justice for almost 18 months. And during that period, not a single Supreme Court judge was appointed. Yes. Because the collegium system could not arrive at a consensus. No, it is not because of the collegium system. It is because as a collegium, we were unable to arrive at a consensus. It is not because of the system. It is because we failed as a collegium to arrive at a consensus about the names. Because a particular... Or in some cases, about the order in which there should be an elevation. Because there was a particular judge in your collegium who insisted that Justice Akhil Qureshi be elevated to the Supreme Court. The government didn't want his name. Akhil Qureshi was one of the judges who was not appointed. There were many who were not appointed. That's right. They were all appointed afterwards. But for 18 months, we did not have a single appointment to the Supreme Court. Yes. So, what does that suggest? There have been periods when you haven't had elevation for 2 years. You haven't had elevation for longer. What is so extraordinary about this? We couldn't arrive at a consensus. It can happen in a human institution. Do you believe, therefore, that there is a need to relook at the system as it exists? Why should judges, 5 sister judges, sit together and decide on who will be who will be their fellow judges? Should the executive have a greater say, as the executive seems to want? The law minister seems to be running a campaign calling for a review of the collegium system. Let's not go by the government of the day, the law minister of the day, or the chief justices at the collegium of the day. I'll tell you what my perspective is. Sir. My perspective is that under the Constitution of India, there are 3 organs of government: the executive, the legislative, and the judiciary. They are separated in their functions and powers. They are not separated in their purpose and objective. The objective of all 3 has to be the common objective set out in the Constitution in the preamble. I consider it perfectly legitimate that the executive has a vital interest in who is going to be a judge.
apart from the fact that they are the executive and one of the organs of government, they are also the largest litigant in any court. Now the problem is not that they have an interest in it. The problem is how to give effect to that interest. Earlier, it was only the Chief Justice of India who decided it along with the government. Sometimes the Prime Minister, the executive, the law minister. Then came the two judges case. It was widened. The Chief Justice of India's power was shared with the collegium. Power and responsibility. It was also, you brought in more fresh views on the same elevation. Then came the parliamentary law NJA, National NJC. Judicial NJC. That provided a wide representation to all kinds of opinions, including to social workers, eminent people. The Supreme Court did not agree with it, and they struck down that law. They also struck down the constitutional amendment on the ground that the independence of the judiciary expressed through the appointment of judges is a part of the basic structure. So there was no say to the executive formally. And that is as it is at the moment. Do you support that? What? Do you believe that the executive should have no say in the appointment? No, I don't support it. I started by saying that they have a vital interest in the... Should they have a veto power? No, they shouldn't have a veto power. The primacy of opinion must be that of the judiciary. The reason is, we know what is the caliber, the merit and the suitability of the judges who are to be elevated. We have seen them right from the days they were lawyers. We have heard appeals against their judgments. We know how they think. We are best positioned to see which judge is meritorious. But those judges of the superior court, we are only talking of superior courts, because in the 70% of the judiciary, the public service commissions appoint them, which includes the government. Yes. We are only talking of High Court and Supreme Court. These courts, these judges have to take an oath of office. That oath of office says that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall uphold the Constitution and the laws, and other things. Yes. It is important that a judge can do that as a judge. And on these aspects, it is often the executive's opinion which is vital. For instance, when the Intelligence Bureau reports to us, things like what are the activities of this judge. Now, you imagine a situation, a gross case, where one of the candidates is of the opinion that India should not be a sovereign entity like it is. There should be a separate state somewhere. Separate means outside India. The executive is in the best position to tell the court that this is not a suitable candidate, the collegium. So the executive's opinion is important. With or without the NJC, I have full respect for the judgment of the Supreme Court. I am saying that consultation with the executive can be made by the Chief Justice of India and the collegium. Their views taken, but I believe the primacy must remain with the Chief Justice or the collegium. Okay, I think you've been pretty clear, categorical in that sense now about that. Consultation, but the final say must remain with the collegium is what you're telling me. And consultation, I do not mean concurrence. Okay, point taken. So we have very limited time left, but I'm going to ask you some more. Let's lighten the mood. The most difficult case in your career? It's a case I didn't decide, but I'll tell you some. I mean, there was a laborer who was charged with rape and murder of a young girl. Yes. And and that chap had been convicted. Well,
the appeal was pending, the investigating officer committed suicide, saying that I have been forced to implicate this chap, and he managed it successfully. The High Court agreed that his suicide note is true, and we were hearing an appeal. Obviously, he ought to have gone scot-free. This is Lalit, the expert in criminal law. But I took the view that we should not acquit him till we prosecute these prosecution witnesses who had lied through their teeth. And there was a difference of opinion between my colleague and me. He said, no, we'll just let him go. I said, no, we must prosecute him. Fortunately, unfortunately, the bench changed, and I couldn't decide that case, but I have never been so foxed in a case as in this one, because the suicide note was not part of the trial record. It's interesting you're saying that, because your one judgment did create a lot of controversy, where you, not judgment, but an observation you made in court, where you suggested to a rape victim that she marry. I didn't. This is what was reported. I'll tell you what happened. That she marry her alleged rapist. Frankly, I want to tell you what happened because I haven't got a chance to tell anyone what happened. Please do. The boy and the girl had a love affair. They were related to each other distantly. They had a love affair, and the parents on both sides objected because they were spending a lot of time together. So they told them, you get married. You can't carry on like this. They had an affair for 7-8 years. And they signed an agreement that we'll marry. Now that chap came in appeal. He applied for bail. And that woman then said that I'll prosecute you for rape because we've been having sex and you haven't married me. So that his bail was rejected. He came by way of a bail application before the Supreme Court. I told him that what is this matter you've been living together, and there is this agreement on record which you have signed to solve this family dispute. Right. And are you going to get married or not? That is what I asked. Okay. Just a minute. And then I rejected his bail application because they said, no, we have not married, I haven't followed this agreement. I rejected his bail application, and these intelligent people in society wrote to me saying that you must review your orders. Means what? Grant him bail. Absurd things. Okay, this is the danger of obiter dicta. Yeah. Making headlines. But my final question is, there was a nice picture of you on a Harley Davidson. We haven't seen too many CJIs on a Harley Davidson. You're a Mobike fan. We didn't know it till then. Any regrets about posing there in... I wasn't posing. Somebody got that Harley Davidson. I sat on it. And there was somebody who had nothing to do with anything who took a picture and sent it to her lawyer husband. Right. And that is how it went around. I didn't ride it. I only sat on it, though I would have liked to ride it, I will tell you that. It was COVID times, a lot of, you know the rest. But frankly, I became very popular with the younger crowd. You did. and you've also become very popular among judges because during COVID times, you brought in online technology to encourage more and more people to appear before court. It's now hybrid, and I think it's made a huge difference to the courts, and that will be one of your many abiding legacies, Justice Bobde. But thank you so much for joining us and giving us your perspective. Appreciate Justice Bobde there taking those questions. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as you raise a warm applause for Justice Bobde, may I please call upon Mr. Virendra Kumar Kasliwal to come up on stage. He's the Chief Financial Controller. Sir, just 2 minutes, sir. To come up on stage and present a small token of our appreciation to Justice Bobde. It's not a Harley Davidson, don't worry. You have one? Wow.
Thank you, sir. That's not it. So Rajdeep continues with our next session. As he said, we have two former Chief Justices and the current there. So the next session, over to you, Rajdeep. Our second Chief Justice is another very distinguished occupant of the post who served as Chief Justice for just 74 days last year, but whose tenure is marked by truly some remarkable achievements. Most notably, the manner in which more than 16,000 cases were listed and almost 4,000 of them were cleared within the first 12 days of his tenure as CJI. And constitution benches were set up to dispose of key pending cases of constitutional importance. Please welcome Justice U.U. Lalit. Firstly, Justice Lalit, the manner in which you attempted to clear that judicial pile up in the apex court, was that a mission that you set yourself when you became Chief Justice? You knew you were Chief Justice for less than 3 months, but quite remarkably from day one, you really cracked the whip. It was not a mission, but it was something like a concerted action on part of everyone who was on the bench. The day I took over, same day we had a full court meeting, and I placed before all the judges the statistics that there are about, say, 55 death sentence matters which are pending. And under the regime that the Supreme Court has accepted, a death sentence matter has to come before a bench of 3 judges, which means that one must have sufficient number of 3-judge bench combinations. If you have just 1 or 2 combinations, the judges get sort of, it starts weighing on their conscience that how many death sentence matter am I supposed to hear? So I said we must have at least 6 3-judge combinations so that we can divide the work amongst the benches. We were 30 judges. So I also told all my colleague judges that divide 30 number by 5 and we can possibly have 6 constitution benches. All of us will be part of the benches. So what I did was 6 3-judge combinations, which means 18, 6 2-judge combinations, which means 12. Every time, just add A on one side and B on the other, and you have a constitution bench. So this is how we started. Then the second part which I told the judges was that there were referred matters to 3 judges combination which were pending consideration. What happens is, on a question of law, if a matter is referred to a bench of 3 judges, there is a domino effect that there are a number of other matters which are waiting for the decision in that matter. So therefore, if you decide one matter, logically you are actually deciding host of the other matters. So therefore, it is in this situation that we devised a way, and that's how we started. And I must thank every colleague of mine that everyone rose to the occasion and we started disposing of matters. But it's had a huge effect. I can tell you that a lot of lawyers have truly appreciated it. Those who cover the courts have appreciated what you did. But, I'll give you an example. Number of cases that were pending for a long time. The Siddiq Kapan case. A journalist is arrested under UAPA in 2020 October. The bench headed by you grants him bail in August 2022. And this comes at a time when a number of lower courts in this country are reversing the basic principle of law, bail, not jail. They're instead saying, not granting bail. You can go to Shah Rukh Khan's son's case in a lower court or a number of other less high-profile cases. Is that a worry for you? That, as someone who's an expert on criminal law, that a number of judges, especially in the lower courts, are not granting bail in cases where bail should have been given as in the normal courts? See, it depends upon the perspective of an individual. Some of the trial court judges, perhaps, they think that the case is not made out for grant of bail. Add to it one more dimension. Many of the statutory provisions make it difficult to grant bail. So therefore, there is an embargo
under the statutory provision, say for instance NDPS law, the bail cannot be granted so easily. So therefore a satisfaction first has to be entertained, has to be recorded by the judge that very well, in my view, the man is not guilty of the offense with which he is charged. And then only the process of bail consideration then happens. So most of these occasions where the trial court or the judges in the first court do not grant bail may be because, number one, that the matter is still sort of, pending investigation. So therefore, on most of the occasions, the investigating machinery comes up before the court and says that we are still in the process of investigating. So therefore, the court has to make up mind whether on the basis of material case is made out or not, or should I wait for some more material? It may be that way. But do you think there needs to be a review of the process, that the Supreme Court needs to send out, perhaps the Chief Justice Office needs to send out perhaps a clearer message? Look at the way PMLA, sir, the Prevention of Money Laundering Act, has now, and it's based now on a Supreme Court judgment, virtually giving police powers of a kind to the Enforcement Directorate that are draconian. Because it essentially means you are guilty and you will have to prove innocence. Enforcement Directorate can come into my house under PMLA, arrest me, and I will struggle to get bail for months on end, even if I may be innocent. You are right, it may happen in an individual case, but if you see the judgment of the Supreme Court, which was rendered by a bench of 3 judges, of course the review is pending on that issue. But this very point was urged before the court, and the court did not consider it appropriate to rule on that, to say, and actually said that PMLA definitely hinges on one part, which is that the bail provisions, as I mentioned in the earlier just about 5 minutes back, some of these statutory provisions make it difficult to grant bail, and PMLA is one of them. Should they be reviewed? Then the validity of the legislation has to be challenged, number one. Number two, it is a parliamentary legislation. So therefore, it is our legislators who have come out with this particular law. Unless and until that legislation is validly challenged before the court is bound to proceed on the basis of that. Justice Lalit, let me come to where, in a way, the thread that I began with Justice Bobde. How independent are our courts? Has the apex court in this country turned into what scholars like Gautam Bhatia have suggested, an executive court, mindful of being in line with whatever the political executive really wants? Basically, for all the obiter dicta that often we hear from judges, all the fire and brimstone against the government, when it comes to the judgments, they fall in line with what the political executive wants. This is what legal scholars suggest is the making of an executive court. I do not subscribe to that view at all. According to me, all the courts are quite independent, and you will actually see it in the process. Say, for instance, 2 matters which came before me. One was Siddiq Kappan, the other was Tista Setalwad. Both of them were released on bail. Another matter which came before me, Vinod Dua, he was also granted solace relief in the matter. Third one, again somebody from Varavara Rao, again we granted him relief. It's not as if, please, and what happens is we jump in immediately to make a generalized statement. It is not so. The courts are completely independent, and this kind of theory which Justice Bobde actually referred to, that it is very, very difficult for the judges and very easy for somebody from outside to criticize that, correct? As media persons, we can... Of course, yes, you are entitled to. It's our job to, in a way, question. You say criticize, but the sealed envelope, important cases, the judges say, please give it to us in a sealed envelope. We don't know what's in the sealed envelope. That results in a lack of transparency. I'll tell you, this all started in that Vineet Narayan case, That's which right. was Jain Diary case, correct? At that juncture, the Supreme Court was interfering or was considering the matter, and at that juncture, the investigation was still on. It was not clear whether the material which the investigator had collected, was it worthy, was it sufficient? But at the same time, the court just wanted to consider that the issue was considered or looked into by the investigators. So therefore, sealed envelope was entertained. The court did not pass any order. All that it said is that if, according to you, Mr. Investigator, there is a case made out,
proceed further. That's it. You know, it's interesting you mentioned just now, a little while ago, the Teesta settlement case. Because I recall, sir, and let me be honest today, when you became Chief Justice, there was media comment again that Justice Lalit, I think when you became a judge actually, that you had been Amit Shah's counsel in the Sohrabuddin case, and that will Justice Lalit therefore be truly independent? You showed through your judgments that you were independent, and kudos to you for that. But there was this sense that did that ever weigh on your mind, that will the media commentary that plays out, that here is the Home Minister's former counsel in the Sohrabuddin case, now the Chief Justice. Were you under extra pressure at any stage? Not at all. See, as a lawyer, I represented something like 18 chief ministers in various matters, including S.M. Krishna, who was from Congress, Sukhram, who was from Congress, some of the 3 chief ministers from Maharashtra who were from Congress, Yediyurappa, who was BJP, then Jayalalitha, who was again in the opposition. So I have represented number of them. I have not met any one of them. So therefore, it was only pure and simple professional assignment. To me, it was like appearing in any matter, whether it was ABC, XYZ, or that politician. Makes no difference. That's wonderful to hear, sir, because I think it's important to recognize perhaps that sometimes the media criticism, as you said, is based around speculation. But let's come for a moment to judicial pressure. During your term, the one case where you found yourself in a bit of a spot, you listed a case on a Saturday on an appeal filed by the Maharashtra government challenging the acquittal of a DU professor, G.N. Sai Baba, accused of Maoist links. Many saw this as unusual, especially as Justice Chandrachud on the Friday had orally expressed a view against any urgent listing. Next morning, listing takes place, a bench sits, and the acquittal is suspended. And many believe that this was done under pressure. I've already responded to this line of question in one of the interviews, and that was by, perhaps I think, Srinivasan Jain. That's right, after Correct? you Yes, demitted that's office. Right. I'll tell you, in case now that you have repeated the question, then I must answer it completely. See, it was a Friday, and that was the last working day for Justice Hemant Gupta. So he was demitting office, and on the last day, the custom is that the retiring judge sits in with the Chief Justice. So he was sitting with me. And the last day, the number of matters which are listed before such a bench are very, very less. So we rose for the day around 1 o'clock. The matter was mentioned in court number 2 because the Chief's court was not sitting. So it was mentioned before the bench presided over by Justice Chandrachud. Justice Chandrachud, naturally, because when you are mentioning, the papers are not before you. So the matter was mentioned by the learned Solicitor General, and his first reaction was that in case the bail is the issue, then why should we list it tomorrow? Correct. But finally, the Solicitor General perhaps was able to convince him. So therefore, the order which was passed had 3 paragraphs. Number 1, saying that the apprehension is expressed by Mr. Solicitor General that in case the matter is not heard immediately, the person may be released immediately. Yes. Number 2, we therefore allow him to make a mention before so that to get the matter listed next day. Now, it was possible for the court to list the matter next week because the normal mentioning was there. But the court was definitely convinced that if we list the matter sometime next week, that is Monday, Tuesday, or Wednesday, perhaps the urgency which has been canvassed will completely get nullified. And therefore, the chance had to be given that in case the matter can be listed on Saturday. Now, the other thing is, such kind of urgent listings, the court number 2 is not entitled to do. Going by the master of roster, it is only the chief who can do it. So therefore, the order was actually put in a very, very, what we say is the format of deference, that we give liberty so-and-so to make a mention. But the intent of the order is that definitely you consider the matter. So therefore, at about say 4 o'clock when the matter was brought before me, the order, the paper book again was not before me.
Secondly, the man who brings before me the order was not aware as to what oral observations were made by the court while the mentioning was on. So I was to go to the hall where the final felicitation of Justice Gupta was to be undertaken. So as we enter, the first person that I wish to contact is Justice Chandrachud himself. I approach him and say that now that you have actually come out with this order, will you be part of the special bench to be constituted tomorrow? He had certain reservations because he had given some kind of commitments to somebody. So therefore he said it won't be possible. The major part of the day I have given some commitments. So therefore I turned to the next, because it was right there, all the judges were there. So 3 judges, Justice Rastogi, Justice Gawai and Justice Suryakant, I approached them. They again say that we have some other commitments. The 4th judge that I approached is Justice Ravindra Bhatt. He said, sir, I have actually called the steno to complete a judgment, so therefore I have some commitment on that front. But in case you don't get anybody, I'm willing. So as a default option. So the next person that I contact is Justice Bela Trivedi. She says yes. Then the man next who I bump into is Justice M.R. Shah. I again put the same question to him. He said yes. So this is how the bench got constituted. Okay, I'm glad now, you gave... No, just listen to that. None of those persons, neither M.R. Shah, nor Bela Trivedi, nor me, are aware of the intricacies of the matter. The intricacies of the matter are actually before the bench which had heard the mentioning. None of us were even aware of that. We simply listed the matter next day. Why? In deference to what the order had said. Okay, it's interesting that you've given that backstory to clear the air. Again, it's part, as I said, therefore, the media will have their own commentary, which carries on, and I will come back to the media pressures on a judge. But very quickly, sir, collegium system. Do you approve of what the law minister has been saying publicly, calling for a review of the system? Do you believe that the executive deserves a greater say, or some would even say a return to the NJSC, the National Judicial Appointments Committee? Do we need a return to that? See, as judges, we take oath that we will abide by the Constitution as by law established. Wasn't it the judgment of the 5 judges which said that NJSC is not the correct law? So are we supposed to observe and go by the Constitution as by law established, or have a different modality? We had to observe purely by the collegium system. See, in a polity, if you have another system, if you have another regime in contemplation, let that regime be put in place in a manner known to law. The moment it is put in place, the judges will be bound to observe that. As of now, if you ask me my personal view, then according to me, the collegium system is the ideal system. Is the ideal system? Absolutely. You don't believe it leads to aberrations, it leads to sort of lack of, there is an opacity to it, there is a sense that the judiciary becomes a bit of a cabal that decides on its own who will be the fellow judges? See, I'll tell you. Now, this collegium, which was headed by Justice Ramana, where I was judge number 2 in the court, we had Justice Khanvilkar as number 3, and 3 of us, we made recommendations which were accepted by the government, and about 255 persons were appointed. At the same time, we did not accept the matters which were coming through the collegium of the High Court. And about 70 or 80 names we rejected. 40 odd names are still under consideration by the government. So therefore, look at the kind of, the statistics themselves show that we at the apex level, we don't accept everything which comes through the collegium of the High Court. Now, how is the matter actually coming through the collegium? See, you require judges at every level. The whole system is geared to have the best possible talent. Now, under the Constitution, the lower judiciary or the district judiciary is completely under the control of the High Court. Appointments, posting, promotion, transfers, everything is done by the High Court. The executive has no say. It is through these courts that 1/3 of the strength of the High Court is actually forming. So you have those persons whose
entire profile is seen by the High Court at every juncture, not just one or two persons, but repeatedly as an institution. Similarly, the advocates who practice before the High Court, the judges who form the body, they see their performance every day. So who are actually supposed to be better positioned to see the merit or the talent? Somebody sitting as an executive here, or somebody who is actually seeing the grassroots level performance, say in Kochi or in Manipur or in Andhra or in, say, Ahmedabad? Now, it is the High Court alone. So let me quote again Dushyant Dave, a senior Supreme Court advocate. We have a large number of judges who are highly questionable. They either lack the expertise or the knowledge, and most of all the commitment. I know of judges who haven't delivered a single good judgment. I don't know about Mr. Dushyant Dave's sort of, this particular statement and why he made that statement. But it is for him to justify that. I can't actually have a counter justification, correct? According to me, see, that is exactly why. When a man is made judge of the High Court, you see the performance. When we select a man, Justice Bobde, anybody who has been part of the collegium, we see the judgments, we see the kind of performance which he has over a period of time has actually come out with. It is after that that 5 judges of the Supreme Court then consider whether a man is worthy or not. At the same time, they are also guided by the advice given by what we call the consultee judges. So in the process, there are not just 5 who are collegium judges, but there are other consultee judges as well. At the same time, the version coming from the executive, as Justice Bobde said, that perhaps it may have something to say about the profile of the man. It may be that there may be some kind of complaint against him. There may be something, some dark corner somewhere in the persona, which perhaps as judge in the collegium we are not aware of. So therefore, that part of the consultation through IB reports, through everything, is also placed before the court. It is after that that the process, that the decision is taken. Okay, because there are interesting cases like that of Justice of Senior Advocate Saurabh Kirpal, which has been held up, and its result is his sexual reason for it. All of this is speculated. See, again, now just consider this. The collegium did not falter on Saurabh Kirpal's case. Collegium did make a recommendation. Collegium did reiterate. So how do we say collegium system is bad? It is the fault lies somewhere else, if at all. Okay. I want to ask you this in conclusion. You quite wonderfully, after you retired, have gracefully gone to teach O.P. Jindal University, Mumbai, IIT. You're teaching constitutional law. Honest answer. Should former CJIs or judges after retirement take any government sinecure without a cooling off period? We've just had a Supreme Court fellow colleague of yours becoming a governor of a state. We've had a Supreme Court Chief Justice becoming a nominated member of the Rajya Sabha. Do you believe this is a healthy practice? It all depends upon the individual. See, some individuals may find nothing objectionable. A person like me would rather say that, very well, let me try something else in another quarter. Correct. I have been a lawyer, I have been a judge. Let me be a professor now. Yes. I think those cheers really say it all, that there is a problem if you don't have a cooling off period. So very quickly, your most difficult case. Not in terms of any quality or any kind of problem which it posed, but sheer bulk of the matter, that was 2G. The kind of paperwork which ran into lakhs and lakhs of pages, to be controlling that, to be sort of in the midst of everything, where there were, at least by the time we finished, more than 150 witnesses were examined, so much of documentation. So sheer bulk, that was the only thing. What's the most satisfying thing about being a judge? You were a very successful lawyer. What was most satisfying of being a judge? You must have taken a huge cut in salary to become a judge. All that is something completely a personal decision, correct? Yes. See, I always felt that I have been part of this institution. Before I took that plunge, I had put in about 32 years in the practice as a lawyer. I have earned some name, some fame, some money, some stature
It is only through that profession which is the law profession. So there is some way to give back to the society, and that is where I accepted judgeship. Another feature or another form in which I wish to give it back to the society is teach the law students. That's it. Three words to describe the state of the Supreme Court today. Fantastic court, yet tremendous area for improvement. Okay, I think you've left enough. You've given us a teaser perhaps for another interview where we'll discuss perhaps those areas of improvement. But Justice Lalit, it's been a pleasure having you here today. The pleasure has been mine. And speaking so openly and freely, I think moment people demit office, some of that burden goes away and you can speak even more freely. And I'm sure that's as true of you as many others. Thank you so much. Thank you, Justice UU Lalit. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Justice UU Lalit as I call upon Nitin Seth, Vice Chairman TOPS, to come up on stage and present a very small token of our appreciation to Justice Lalit. Once again, ladies and gentlemen, please put your hands together. Raise a warm applause for Justice UU Lalit. Ladies and gentlemen, just want to give you a heads up. The photo exhibit that I was telling you about right outside at the Shah Jahan Hall, where India Today's AI team has completely reimagined some of our iconic covers, is only going to be there for just about an hour or two more. So do go out, step out, take a look, because we're going to clear the hall for the Prime Minister's security. He is our keynote speaker this evening. The area will need to be sanitized, so do go ahead and if you haven't till now, and I recommend it highly, you must go and do it. Also want to reiterate that whatever you've seen yesterday, today, were thought leaders from all walks of life coming in together, sharing their vision of the India moment. All of that, the highlights of it, will be re-encapsulated in our next edition of the India Today magazine. All right, we're ready to go into our next session for this afternoon. Do settle down. Those crowding the aisles, please just come in, settle down. All right, let's get into our next session this afternoon. Soul eclipse, why our children are self-harming, how to fix it, insights on the teenage depression epidemic in India. We've put together a short film on teenage depression. I'd like you to see it before we cut across to our session's moderator. Teenage and depression, they just don't go together, right? I was around 16 years old. Day after day, I would wake up feeling shattered. I think one of my closest friends struggled with mental health. I think she was just 12 or 13. It took me more than 6 months of suffering, 3 or 4 suicidal attempts,
and many notices from university of absence to convince my parents that I need medical attention. A lot of my friends have considered or have actually self-harmed. In my circle of friends, I've encountered a lot of cases of depression and anxiety. Do not really understand what depression is. They think that you have to be of a certain age to be depressed. Bullying would be one of the biggest reasons for depression. Body shaming people, making fun of people for their sexuality. There's this need to please on social media, being very conscious of what you're posting, wanting to edit every picture. Be it in family or in school, people are unconsciously pressure boys to be a certain way. First would definitely be family issues. My parents, they didn't handle their divorce as well as they should have, and I feel like that's the case with a lot of people, and they involve their child too much, way more than they should. I think bullying is a big one. A lot of people still feel like they can't confide in their parents. There's a big divide between people of other sexualities and people who are considered to be conventional. Everything is so competitive. Anything below 99.99% feels like a failure. Body is a very big one. Skinny is a constant one. Then there's snatched, which is having a really small waist. Domestic violence obviously has to be on that list, because once a child sees that, it traumatizes them for the rest of their lives. It's not just sadness, but it's prolonged sadness. Tier 2, Tier 3 cities, the one which I grew up in, there aren't enough examples how to be around such a person and how to extend a helping hand to such a person. One thing I've realized is the importance of therapy, but even before that, the importance of clear and honest conversations. When we are going through a tough phase mentally, we know what we need to do. We know how we can get out of it. It's just that we can't do it. It was always a hush-hush topic. Even at home, it was always a hush-hush topic. It's a very tricky, murky battle to fight. But it starts with baby steps. And the first being acknowledging that it might just exist and it's not such a bad thing. To an extent, social media should be age restricted. 8-year-olds shouldn't be exposed to the same things a 16-year-old would be allowed to be exposed to. If someone is depressed, their loved one should just be with them. Whenever mom has panic attacks, I'm just always with her. And then I guess that calms her down. I guess it was the divorce between her and dad which triggered it. In those moments when men do need help, it's not always given, because most people feel like you shouldn't need it. Yeah, in the scope of our school, there's a very set stereotype of who will be popular and which girls are pretty, and because of that, how well liked they are. I think a lot of the times it's just seen as attention seeking. Awareness doesn't always mean understanding. Depression is just so commonplace. It's an irony how it's not there in everyday conversation as it should be. Well, to take it from here, I'd like to invite our session's moderator, Shoma Chaudhary, Consulting Editor, India Today Group. Good morning. Continuing a tradition that India Today started 2-3 years ago of spotlighting a very, very important issue in our society, which is teenage mental health. It's not talked about enough. And we're really hoping that these sessions will draw more and more attention to this. You saw this little film. It gives a sense of the echo chamber of how widespread this is. There were some statistics there, and I'll just share one more before I call the panelists on stage, which is that in India, and this is all underreporting, there are about 200 million people who suffer from active depression, and only about 30% are seeking help.
and to show that this is really something that's ever escalating. In America, we've just, some statistics say that 60% of young girls in America, 3 out of 5 are so persistently sad that they have fallen out of normal activities. So that's really like canaries, telling us what's wrong with our society, and to discuss that, to draw attention. We have a really, poignant, powerful panel today, and I'd like to first call on stage Pranavi Khandekar. She's 22 years old. Pranavi, please give her a warm welcome. Pranavi is 22 years old. She's studying psychology at Ambedkar University. And Pranavi is somebody who suffered from depression from the time she was 9 to, she's still coping, healing. She's someone who's self-harmed, who's tried to commit suicide, has OD'd, and she's here to tell us, what really happened with her and what was her state of mind during those years. I'd next like to call on stage Abha Adams, who is a very, very respected, well-known educator in India. She has been the director of Shri Ram Step by Step and has worked with children for more than 30 years. She's written a book called Parenting in the Age of Anxiety. So please give a warm welcome to Abha. And now we have Nupur Dhingra, who's a psychotherapist and psychologist, works with her consultancy practice is called Family Tree, and she works a lot with young children and families, so has great insight into what's going on. And next I'd like to call Shudipto Patra, who is a parent, he's a professional in his own right, a media person, but again, who both his sons have suffered from acute depression, the elder son more so, is someone again who's self-harmed, tried to commit suicide, and is now, in the process of transitioning to a new gender. And Shudipto's here to share with us, from a parent's perspective, how to deal with children who are wounded in any way. So thank you very much for joining us.